हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में लेट अस स्टडी अबाउट द सिस्टीन क्रिस्टल्स इन द urine. So the cystine crystals usually occur whenever there are inborn errors of metabolism where the cystine cannot be absorbed by the renal tubules, that is called as cystinuria, and because these crystals will then precipitate and they will form the stones. So here in cystinuria what happens is ये जो ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं यूजुअली ये सिस्टीन को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं या सिस्टीन रीएब्सॉर्ब होता है हमारे बॉडी में, बट इन cystinuria there is a defect. These transporters are either non functioning और रीएब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है एंड ये सिस्टीन के जो एक क्रिस्टल्स रहेंगे हेक्सागोनल क्रिस्टल्स आप देख रहे हो ये बिल्डअप होता जाएगा. So this is an autosomal recessive disorder wherein there is defect in the amino acid transportation. कहाँ पे होता है ये? Proximal convoluted tubules of the kidneys में, which leads to amino aciduria. क्योंकि वो ठीक से transport नहीं होता है, absorb नहीं होता है, the amino acids are excreted in the urine, like it could be cysteine, ornithine, lysine and arginine. So when this is excreted, the cysteine will start precipitating and forms the hexagonal crystals in the urine. So this you can see here, this is the proximal convoluted tubule of the kidney, and here the all the amino acids, the cysteine, ornithine, lysine and arginine are not being able to be absorbed here and they are excreted, and once they are excreted, the kidney, the ureter, the bladder, they will crystallize this and they will start forming the crystals as well as cystine stones. So these are the cystine stones what you can see here, and this cystinuria usually asymptomatic रहता है whenever there are no stones, but एक बारी stone form हो गया then the patient will start having nausea, vomiting रहेगा, urine में blood आएगा, urinary tract infections हो जाएंगे, patient can have acute kidney disease, chronic kidney disease. So these people with cystinuria they will pass stone monthly या weekly or daily, and they will be needing follow up and they always have a risk of developing chronic kidney disease. ये छोटे बच्चों में जो स्टोन्स होते हैं उसके लिए भी एक कॉमन रीजन है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टीन्यूरिया. एंड दिस आर द सिस्टीन क्रिस्टल्स व्हाट यू कैन सी इन द यूरिन. ये जो क्रिस्टल्स रहते हैं ये कलरलेस रहते हैं एंड दे आर हेक्सागोनल्स, एंड दिस sometimes they have this irregular plates also, irregular sides also. They can be seen singly or they can be seen in clusters. Sometimes they form rosettes, okay, and they form aggregates also, what you can see here. So the crystals appear in acidic media. So these crystals अगर आप यूरिन के pH को ज़्यादा करोगे तो ये soluble हो जाएगा, and that is why this is one way of treating the cystine crystals also. They are more seen in acidic urine. So these are again the cystine crystals, what you can see, the hexagonal shaped crystals in aggregates here. The cyanide nitroprusside test is used to detect this cystine in the urine. So इसमें क्या होता है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है. यूरिन को पहले हम अल्कलाइन करते हैं विद द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड देन हम सोडियम साइनाइड को ऐड करते हैं, एंड इफ सिस्टीन इज प्रेजेंट वो सिस्टीन जो रहेगा वो सिस्टाइन में रिड्यूस हो जाएगा, एंड देन वी ऐड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टू गेट दिस मेजेंटा कलर कॉम्प्लेक्स. सो अगर सिस्टीन रहेगा तो ये रेडिश कलर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सिस्टीन देयर इज नो रेड कलर विच इज डेवलप्ड, एंड हम को इसको कंफर्म करना होगा बाय क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा. सो दिस इज वन ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर cystinuria. So this is the hexagonal plate you can see, and here you can see the irregular sides also, and this is the phase contrast microscopy, and this is the bright field microscopy where you can see these crystals, cystine crystals, and this is the multi-layered crystals which you see here in bright field microscopy, and in dark field microscopy you can see the layering of the crystals, and under polarized light जब आप देखोगे ये crystals
जो सिस्टीन के क्रिस्टल्स रहेंगे ये बाई रेफ्रिजरेंट रहेंगे एंड इनको मोनोक्रोमैटिक पैटर्न आता रहेगा. सो देयर इज ओनली वन कलर, दैट इज मोनोक्रोमैटिक पैटर्न. ये यूरिक एसिड एंड सल्फामेथोक्साजोल जो क्रिस्टल्स है समटाइम्स दे आल्सो कैन precipitate as hexagons. But what is the difference between cystine crystals and these crystals? यूरिक एसिड एंड सल्फामेथोक्साजोल जो क्रिस्टल्स है वो पॉलीक्रोमैटिक रहेंगे पोलराइज्ड लाइट के अंदर, whereas सिस्टीन जो रहेगा वो मोनोक्रोमैटिक रहेगा अंडर द पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप. सो सिस्टीन स्टोन्स जो है इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दिस स्टोन्स ऑन एक्सरे. सो हमको आइदर वी नीड CT और अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट दिस सिस्टीन स्टोन्स. एंड the urine का जो smell रहेगा in cystinuria it will be very typical, that is smell of a rotten egg because of the increased cystine in the urine. So remember this urine cystine crystals, this is an abnormal crystal. We don't expect to see this in a normal urine, and most commonly they are seen in inborn errors of metabolism like cystinuria, which is a defect in the absorption, the transportation of cystine, and because of which these amino acids cysteine, ornithine, lysine, arginine, they get excreted in the urine and they form crystals. They also can form the stones. So this is an autosomal recessive डिसऑर्डर्स. ये जो सिस्टीन क्रिस्टल है ये कलरलेस रहेंगे, हेक्सागोनल रहेंगे, ये दे कैन हैव इरेग्युलर साइड्स एंड दीज crystals are soluble in an alkali, and that is how we treat these patients with cystinuria. We make their urine alkaline so that these crystals are dissolved. These crystals have a tendency to form the stones that is called as a cystine stone. How do we treat this cystine renal stones? We increase the fluid intake so that the crystallization doesn't take place. There is no precipitation and it will flush out all the crystals. So the fluid intake is increased. We increase the urine volume. We alkalize the urine. I've told you that these crystals are soluble in higher pH. So we alkalize the urine, and penicillamine is given because penicillamine binds to cystine and it will prevent the crystallization. So this is all about cystine crystals and cystine stones and cystinuria. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.